and I can tell you one thing, देखो ମୁଁ starting ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ कि ଆମେ ଏଇଟା discuss କରିଥିଲୁ ask, right, attitude, skill and knowledge. So I told you that this knowledge part is very less relevant. I'll not say irrelevant, but less relevant for prelims specifically, because prelims रे कौन होगा कि hardly 20 questions, okay, or let's say even 30 questions hardly you will solve on the basis of knowledge. तो 30 क्वेश्चन तो किसी हबार नहीं, 30 क्वेश्चन सपोज 100% एक्यूरेसी रेशियो रे भी यू आर गेटिंग माने सब सब किसी ठीक कर देलो 60 मार्क्स ही आसी, राइट, 60 मार्क्स का कट ऑफ क्लियर हबन. So rather attitude and skill, these are the things that are going to help. आई नो कि किसी एमती महापुरुष अच्छा जो मैंने केवल नॉलेज बेसिस रे क्लियर करते माने बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, दे अटेम्प्ट अराउंड 70, okay, 80 questions and they still clear the exam. But unless you are one of those people, and these people maybe hardly 50 to 100 such people would be there in the entire, among 6 lakh people. So unless you are among them, you have to use skill and attitude. So skill and attitude, kona attitude bhi ethre kona we will discuss. But in these classes, we are going to develop more about the skill. So which skill is this? This is MCQ solving skills. So this is a broader category under which we are including many other things. एथिरे लॉजिक आसीओ, लॉजिक रो गोटे एक्सट्रापोलेशन है कि एथिरे एलिमिनेशन, सब जिनस रो एलिमिनेशन बाहरी, ऑप्शन एलिमिनेशन, then there are many tricks, and there are sometimes there are also intuition, जहाँ को तुम्हें बड़े बड़े को हमें कहो कि sixth sense. So intuitively you will feel that this option is correct. All of these, suppose this will directly give you the answer sometimes, but all other things will indirectly give you the answer through the elimination technique. So we are going to build our MCQ solving skills. Now elimination technique broadly, it usually works when let's say for example किसी statements दिया है 1 2 3 4 एंड तापर किसी combination दिया है 1 only 2 and 3 only, है ना, 1 2 and 3 only. तो बहुत ही बेसिक रू स्टार्ट करछे. I know that many of you know these things, but gradually what will happen is that this is the first class only, है ना, MCQ solving skills, this is the first class. We'll have bit more classes, 1 2 3, maybe 3 classes around will be enough, है ना? So gradually we will increase our level, understanding complexity सब बढ़ियो, question रो complexity बढ़ियो, then you will get to understand. So for the time being, I'm just explaining to you very simply what we mean by elimination technique. Suppose statement 2 is wrong, 2 काटिदेला, answer सीधा बाहरी आला. Suppose statement 3 is wrong, we know definitely statement 3 is wrong. So statement 3 केवल आमे काटिदेलु, ताले भी suppose answer बाहरी आला. Suppose ये question रे 3 नथिला, 1 2 and 4 only थिला, ताले कौन हबो, you will know कि ए दुईटा भितर जे कोनसी गोटे आंसर. तो या द्वारा आमे एटा भी कोन जानलु कि 1 is definitely an answer. Now if you see 1 is definitely one of the correct answers, and let's say 3 is definitely wrong, then you again, assuming 1 is correct answer, then you try to think what could be the logic about 2 and 4. Okay, बुझी होची कौन कहूची? Yes. Yes, sir. Okay, क्या भी डाउट हो पचारियो. Okay. Now एबे कौन है जी, देखो 2022 पर्यंत एटा पूरा परफेक्टली, परफेक्ट तो हो, नियर परफेक्ट. This is entirely MCQ solving skills, trick, logic, जहाँ भी हो, this is entirely a game of probability, है ना. What do you mean by game of probability? Means how much probable is this? Let's say गोटे इलेक्ट्रॉन या भितर आमे को गोटे स्फीयर भितर अछि, केते प्रोबेबिलिटी संगे हम कहि परियो, लेट्स से 99% प्रोबेबिलिटी, but still that means 1% chance is there कि इलेक्ट्रॉन would be outside this sphere. Similarly, एबे तो एथिरे तो 99% ही होबनी, it will be less. Let's say sometimes it will be 70%, sometimes it will be 60%, 66%, sometimes it will be even 25%. You have to understand according to which level of probability you have to take what kind of risk. So 2022 पर्यंत to a great माने extent we could say that game of probability theory we could assess कि suppose दुईटा हमें क्वेश्चन दुईटा ऑप्शन एलिमिनेट कर देलु, then we know कि बाकी दुईटा भितर जे कोनसी गोटे. 2023 रे गोटे नवा कॉन्सेप्शन इंट्रोड्यूस कले ए सब जिंस काटिया पे, which is pair वाला क्वेश्चन. We'll discuss that also. As we discuss more and more number of classes, today is the beginners class, then it intermediate class का प्रोडा हो, last का advanced level class. We will discuss
today we are not going to discuss very higher level tricks, because first you understand this basic thing. Now just tell me some few, very commonsensical approach. You tell me. Let's say charita option is A, B, C, D. You eliminate one option only. You have no idea about this. Are you going to attempt this question or not? Tell me. Firstly, what is the probability of you getting this option right? This question right? What is the probability now? 33.33. Very good. 33.33%. Okay. CSAT test ହବ ଏବେ ତେବେ ଏଥିରେ ତମେ attempt କରିବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତ କରିବି। Very good. କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ବେଶୀ risky ହେଇଯିବ? Audible or not? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Tell me कि others please tell me. तुषार सेना कौन करियो? Attempt करियो कि नहीं? Yes, sir. Okay, very good. My point is, if you are getting one question right, how much you are getting? 2 marks, right? If you are getting one question wrong, how much are you getting? Minus Minus 0.67. 0.67, right? So now think of this way. Let's say कि ଏବେ ତିନିଟା ଭିତରୁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ. You still go, maybe ଏଥିରେ ତା ମାନେ କ'ଣ trick or logic କିଛି କାମ ଦଉନାହିଁ, but still you can go with some kind of instinct, or you can some gut instinct, you can call it. You can go with some sort of sixth sense, some sort of guess, and you can still try to either directly get one answer or at least eliminate another. For example, another option you will instinctively feel that this option is not correct. Okay. Then you try to eliminate in any way another option at least, and from out of those two, let's say कि A B भितरे भी ଏବେ तुमको doubt हो, तुमको किसी जଣା नहीं. Still I'll say you go with one option. Now statistically this seems like a 50% chances, but let me assure you कि when you माने probability does not work in this way. ଯେତେବେଳେ तुमको ये तीनटा ऑप्शन ଭିतରୁ ठीक से जଣା नहीं, ଆଉ ଗୋଟାକୁ gut instinct से तुम काटी देलो, तापरे don't think statistically 50% ହେଇଗଲା. Still it is 33%, but my माने advice is कि you should still go for it, because many times what happens is that this instinct usually comes from your subconscious, and in your subconscious try to understand this. This is an iceberg theory. This is your conscious. This is something which is known as pre-conscious. This is which is known as subconscious, or usually Freud or theory of unconscious को, but for our use we are going to call it subconscious. Now, most of our knowledge is stored in this part. So many times what we think as instinct comes from this part, which is not readily available to the conscious. Where does this come from? देखो क्लास रे कोठी गोटा पढ़िथिबो, किछि गोटा प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस को जानिथिबो, तो सेटा को इमीडिएटली तुम्हें लॉजिक थ्रो रे किबा नॉलेज थ्रो रे यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई. For that reason you think you don't know it, but that information or that knowledge would be, or that wisdom would be there. So in this exam I will say कि trust your instinct. Believe me, ये सब बहुत जेनेरिक एडवाइस एबे लागुथि, बट एग्जाम हॉल रे जेतेବେଳେ तुम पाखरे ऑप्शन नथिबो, आ लेट्स से कि 70टा ही अटेम्प्ट करिछ, जेतेବେଳେ तुम पाखरे किछि ऑप्शन ही नाही, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? You are going to use these kind of जुगाड़. ये जुगाड़, believe me, जुगाड़ छड़ा और किछि उपाय ही नहीं, unless you are one of these 50 or 100 people जो मानकर कि बहुत ही भलो अछि नॉलेज बेस से जो मान क्लियर करते. So my advice to you is try to attempt as many number of questions as possible. Now let's say कि ABCD भितरु दुईटा क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली, सॉरी दुईटा ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर देलो, तो याकू तो 100% अटेम्प्ट करिया ही कथा. Because why? Because your probability is 50% now. Okay. 0.5 it is your probability. Let's say 10 questions are ये भलिया क्वेश्चन किछि अछि, तुम यदि 50-50 रे भाबे कि यार मते अटेम्प्ट ही करिया नहीं, you are going to get how many marks? 0 marks. 50% probability means what? If you are going to attempt all these questions, 5 questions will be correct, 5 questions will be wrong. So how much are you getting? 10 marks positive. 5 into 2 by 3. 10 by 3 is 2.33. Right? So what is the net?
6.67. So from 0 marks to 6.67 marks additional. This could be the difference. This can make the difference between clearing or not clearing the exam. Are you able to understand? तो 50-50 मार्क्स है तो पक्का तुमको परिवार ही 50-50 ऑप्शन में तो you certainly have to attempt. And of course, if you are able to eliminate 3 of these, तो पाया ही दरकार नहीं, then finally that is your answer. Okay. Are you able to understand? Yes. Now usual disclaimer, you trick logic এটা को सबले secondary basis रे ही हमें लोगों first basis is still if you have knowledge you have to trust the knowledge. Second thing is only with trick and logic you are not going to clear the exam. Okay. If you have zero knowledge then you are not going to clear the exam anyhow, but there should be some basic knowledge obviously. The basic knowledge ऊपर ही हम लोग trick and knowledge use करते हैं. For example, if someone does not have any basic idea about Indian polity, very basic ideas तुमको जाना नहीं, प्रेसिडेंट पर इलेक्शन विषय जाना नहीं, एग्जीक्यूटिव यूनियन जुडिशरी विषय जाना नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर विषय जाना नहीं, इतने सारा बेसिक विषय जाना नहीं, तो obviously तो स्टेटमेंट पढ़ी के से स्टेटमेंट थ्रू ओवरऑल फीलिंग थ्रू सिस्टम बात करते हैं, तो नॉट गोइंग टू क्लियर. These are the some basic disclaimer in any trick kind of approach. Okay. So with that in mind, let's move on to the actual agenda of today's class. So our first trick is extreme statements. Very simple thing. Extreme statements are usually wrong. Not always, but usually they are wrong. So let's go through, read this question. I think this is 2018 question. Ever पढ़ा and पढ़ी को correct answer. Which of the following is the most likely consequence of implementing Unified Payments Interface (UPI)? First is mobile wallets will not be necessary for online payments. Digital currency will totally replace the physical currency in about 2 decades. FDI inflows will drastically increase. Direct transfer of subsidies to poor people will become very effective. Which is the answer? What do you think? Sir, option A. Option A. Why not option B? Let's say Sir, B or D? B. B for ball. Okay. The sir, is it totally replace माने extreme word को हमें जदि minded रखबे तो totally replace तो केबे भी करिवनी. पुणी गोटे timeline भी दे दीची in about 2 decades, which is very unlikely. Very good. So see, totally replace. Can anything totally replace another thing? In this scenario, देखो totally replace करता है जैसे तुम पूरा let's say पूरा ban कर दो, यदि गवर्नमेंट पूरा बैन ही कर देता कैश डिमोनेटाइजेशन कर, गवर्नमेंट ଏବେ କହିବ କି ଆମେ କ୍ୟାश ହିଁ କେହି ୟୁଜ କରି ହିଁ ପାରିବେନି, एंड कौन ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରିବେ ୟୁପିଆଇ ହିଁ କରିବେ, ଦେନ୍ यू कैन एक्सपेक्ट कि टोटली रिप्लेस, बट ସେମିତି ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି, हाउ कैन यू से एंड विथ दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन अबाउट 2 decades 20 years में मैंने कर दे, तो এটা बहुत ही अजीब କଥା. तो टोटली रिप्लेस जेहेतु এটা एक्सट्रीम ही गला, therefore we are going to eliminate. Similarly, see the third option, FDI inflows will drastically increase. See this word drastically. This is also another extreme word. If any question in any option it is given drastically increase, drastically decrease, okay, totally increase, totally ban, totally replace. Okay. So these are extreme words. We call it these as red flag. We are going to use these terms often. Red flag, green flag. So red flag, green flag खाली relationship में आता है. MCQ solving skills में भी हमें use करें. Red flag means less likely to be true. Okay. Green flag means more likely to be. Again, no one is saying this is always wrong, this is always right. It is entirely a game of probability. Okay. So we will think this is more likely to be true. So drastically, this is a red flag. Now direct transfer of subsidies to poor people will become very effective. Now this is
And this is somewhere in between. When it's not entirely an extreme word, but this is what we call as exaggeration. This is another trick that we are going to see in next few next few sections. So exaggeration is also something which is related to extreme. So a scale let's say this is something which is moderate. This is something which is exaggeration. And ଏଇଠି ପୁରା end ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି extreme. So for example, extreme words. What are the examples of extreme words? All, none, okay, totally, entirely, always, never, everyone, no one, everything. Okay. These or nothing. These are all extreme words. Which are exaggerated words? Extremely. Okay. Very, very. Hugely. What else can be exaggeration? Drastically, severely. Practically. Very good. So we are not going to go through all the words. My point is you should understand when there is a kind of words, it should trigger this idea in your head कि this could be an exaggeration. Exaggeration word itself ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଯୋଉଟା ଫେକୁ ଟାଇପ ର ବେଶୀ ବଢେଇ ଚଢେଇ କୁହାହଉଛି ନା କୁହାହବ କି ଏବେ UPI is extremely convenient for everyone every section of the society. This statement would be wrong. It is extremely convenient for all sections. ତମେ ଭାବିବ କି all sections of society जो लोगों को सपोज डिजिटल लिटरेसी जहाँ जाना नहीं जहाँ पाखे मोबाइल नहीं से केमता यूपीआई यूज करियो ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी first of all that will be an extreme statement. Extremely will be an exaggerated statement. So very effective, very is somewhere here. So এই scale रे exaggeration पूर्व very बेले बेले very टा बेले बेले correct हो बेले बेले wrong हो. But if you see this overall logically ଏବେ ଭାବ এই statement को ମୁଁ କହିବା କଥା extreme statement କହିକି ଆମେ କାଟି ପାରିବୁ ନାହିଁ. But logically भाव कि direct transfer of subsidies to poor people will become very effective. Now direct transfer of subsidies ଆମେ କୋଉଥିରେ କରୁ DBT ରେ କରୁ direct benefit transfer. For that you use some kind of banking account. Do we use UPI in this? Government suppose DBT through रे लोकंको account रे पैसा पठेइ. Government UPI कहीं करियो. Government रो bank account अछि ସେମାନେ directly bank account रे beneficiary ମାନଙ୍କର details ତାଙ୍କର database ସେଥିରେ transfer करी. बैंक कहीं तुमको फोन करी पचारि कि सर गवर्नमेंट तुमको पचारि कि भाई तुम तुम्हारा यूपीआई वर्चुअल पेमेंट आईडी यूपीआई हमको दियो हम यूपीआई रे लॉजिकली दिस डज नॉट मेक एनी सेंस. इन फैक्ट इफ यू नो नाउ देखो एबे नॉलेज ले आउट बेटर हो नॉलेज ले कोन अछि व्हाट इज रिलेटेड टू दिस जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीआई प्रथम जैम ट्रिनिटी आसला तापर यूपीआई. तो आम पाखे बेसिक आमर जिनसटा आम ध्यान देवा पहले ना प्रथम आम कह यूपीआई फोकस करिए. So logically you will eliminate this then finally your answer will be. Are you able to understand that? Initially I'm taking some time to explain these things to you. Gradually will go more and more fast. Okay. Faster मैं बस question दे दूँ and we will discuss. You will tell me what is the answer, what logic did you use. More important than any answer is how you are thinking about the answer. बुझी होती और बुझी नहीं Yes, sir. बुझी होती. अरे ଟିକେ feedback दियो है मत जाना पड़े whether you are listening or not. Yes, sir, बुझियो. बुझियो. Okay. Yes, sir, बुझियो. ठीक है. So let's move on to the next example. Next example, there was another question. Basically previous year question. Picture plant system. Consider following statements about picture plant. What is a picture plant? Do you know? Insectivorous.
କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଅଛି କି ଇଟ୍ସ ଏ carnivorous plant that traps and digests insects for nutrition. Second statement is it's a common invasive species abundantly found in all climatic regions of India. Third statement is it is protected under Wildlife Protection Act 1972. Now I'm not even going to give you options. You tell me from the statements which statements do you think raises a green flag and which statements raises a red flag. One is a green flag, two is a red flag, The first is green flag. Second is second is red flag. Red flag. red flag. Third is Maybe green flag. Green flag. very good. देखो हमें ऑप्शन दिखा ही नहीं. From this also you can say that answer would be 1 and 2 only. But फिर भी मैं तुमको आंसर दे दूँ. ऑप्शन दे दूँ. ऑप्शन था 1 only, 2 and 3 only, okay. Then 1 and 2 only, finally 1, 2 and 3. Now if you know that this statement would be certainly be wrong, then if you eliminate 2, एमिति भी तुम्हारा okay, sorry. I made a mistake. This will not be green flag. देखो इधर tricky statement है. This is the trick here. It is protected under WPA 1972. Option बोल रहा था. Now you try to understand the Wildlife Protection Act में कौन होती है. छटा शेड्यूल अच्छी 1972 एक्ट रे नुआ जो अमेंडमेंट अच्छी ସେଥିରେ ତ ଚାରିଟା शेड्यूल ଅଛି. ପୁରୁଣା अमेंडमेंट रे पुराना एक्ट रे छटा शेड्यूल थिला. ସେଥିରେ शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 होची दिस इज हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 होची लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है ना. So these are all protected species. Schedule 5 was, if you see, this was what? This was related to farming. यारो हमें जहाँ को हमें culling करते थे. Schedule 6 was prohibited plants. Plants which are prohibited to be cultivated by any people. In the blue vanda, red vanda, seମିତି picture plant. Picture plant was in the Schedule 6. Now the point is, Schedule 6 is not protected plants or protected species. These are prohibited species. That was the trick. So for that, this statement would be wrong, and the answer would be 1 only. Now the एथिरे अलग logic लाଗୁଛି, but at least one statement you are able to eliminate using extreme statement. Extreme एथिरे कौन है? Found in all climatic regions abundantly. Is abundantly an extreme statement? It is an exaggerated statement. This is all is extreme. Now गोटे exaggerated अच्छी गोटे extreme अच्छी. So এটা obviously this statement would be wrong. बुझिए कि कौन कहूँ? Yes, sir. I think this is relatively simple, right? Now let's take another question related to contingency fund of India. CFI. What is contingency fund of India? Anyone? Policy पढ़ी कि नहीं? तो जो उसको Disaster expenditure. Sorry. One by one. कौन कहले? I think Ashish. Disaster expenditure. Disaster expenditure. Only disaster expenditure. Sir, emergency funds. Any kind of Unforeseen. emergency. Contingency does not Unforeseen. mean only disaster. Any kind of contingency means any kind of emergency. Emergency is a
broader category, and disaster is one of those categories. Okay, माने गोटे subset था. So contingency fund of India रे इसारे दुटा option दिया है कि consider following statements regarding contingency fund of India which are correct. Option में दिया है कि option 1 हला 1 only, option B हला 2 only, option C हला 1 and 2, D हला neither one nor. Now you tell me which raises red flag, which raises green flag. Two statements. One is a red flag, two is a green flag. Two is a green flag, one is a red flag. Sir, Why? one green. Two is a red flag. One is Both green flag. both red flag. One is a green flag. Yes, this is correct. See, withdrawal from it requires parliamentary approval. अच्छा, by the way, withdrawal कहीं करियो parliamentary approval कहाँ कोथरे करियो? Contingency fund of India रे करियो और consolidated fund of India रे करियो? Sir, consolidated रे. Parliament रा. Now the point is कि देखो, they are trying to confuse you with a similar sounding fund, that is Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India is that fund to which our entire proceedings of taxation that goes into Consolidated Fund of India. Other forms of revenue also goes. So सबू revenue ये आउची सबू Consolidated Fund of India को जाओ. This is a single account जो उतरे माने सेंटर ऑफ स्टेट रो सब अर्निंग्स गुडा जाइकी स्टेट जहाँ दोची सेंटर रो सब जाउची. Contingency Fund of India is something else. This is a smaller fund जोटा को आम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू भी माने बजेटरी ये बल टाइम रे आम किसी अप्रूव करके कंटिजेंसी फंड रे बैकअप हिसाब रे रख ना. भाबो लॉजिकली भाबो जते गोटे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रे गोटे किसी मनी अछि आम कहलु कोन एटा इमरजेंसी रे यूज है. एबे इमरजेंसी सपोज जोतरे पार्लियामेंट सेशन चाली नहीं इमरजेंसी आसी एबे आम कोन एटा बिल पास करी हेते पैसा बाहर करी यार कोडी बन्या हे गला तुम कहे कि सर मोटे बिल पास आगो करबी से माने समस्त वोट करिए तापर हेटा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू मनीटा आसले ट्रांसफर होला आम से एक्शन. कंटिजेंसी फंड विल ऑब्वियसली बी ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रे इमरजेंसी पे माने एक्सपेंडिचर करि देबे तापर जहाँ आवश्यकता अछि माने करे हेटा को रेगुलराइज कर. फॉर एग्जांपल सेरा कहि कि ए रीजन पे हमें इतु खर्च करी. So logically also this is wrong. Right? Withdrawal from it requires parliamentary approval. This actually parliamentary approval is required for consolidated fund of India. In fact, it is said that not a single rupee will be spent from consolidated fund of India without the appropriation or appropriation bill passed by the parliament. But contingency fund operates on a different principle. Why? Because it is a smaller fund and it is meant for emergency. So in emergency scenarios, you don't have the luxury of passing anything because that will take a longer time. Now you tell me about this second statement. It has an approved corpus of 5,000 crores. Is it a red flag or a green flag? Sir, एटा red flag काहे ना जदी executive करि परिबो ताले 5000 रखिवा दरकार ही नाही. 5000 करोड़. Very good. Very good. Now think from it in another perspective. 5,000 कोटी टंका कौन कम हेलानी कि 5,000 कोटी टंका गोटे कंटिजेंसी फंड रे काहेकि एते टंका रखा बुझियो 5,000 कोटी टंका माने गोटे स्कीम रो माने ट्वाइस भलिया माने बजट ही एते टंका आमे कंटिजेंसी फंड रे काहेकि रखु ए भलिया यदि कंटिजेंसी किछि आसिला आमे इनिशियली 5,000 कोटी टंका भी कोन संगे संगे सप्ताह जे परिबो तुम 100 कोटी टंका भी माने सप्ताह रे खर्च करिया डिफिकल्ट. तो सेही भलिया यदि 7-7 डेज भी हम पाखे टाइम रहला हम पर कंसोलिडेटेड फंड रो आराम से उठी करी. तो मो कहया कथा कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रे केवल 5,000 crore न. इनफैक्ट एक्चुअली इफ यू सी एक्चुअली 500 crore से रहा सेमान ताको कोन करछन ताको सिंपली 10x कर दी. So this is an exaggerated amount. This is my point कि many times you will find such figures. UPSC will manipulate figures in such a way. देखो 500 करोड़ को एक्चुअली यदि हेई थियो सेमाने केबे भी तुमको लिखबेनी कि 600 करोड़ एटा ऑप्शन केबे भी आसीबेनी 500 करोड़ टा 5,000 करताने क्लियरली सेमान तुमको कहउछन कि तुम यूज करो लॉजिक लगी के भाबो बिकॉज़ एई सब देखो एथरे एई भले सब ट्रैप रे तुम फसले रे खुचरा बुद्धि रे सेमाने तुमको फसले नाही. सपोज गोटे फिगर अच्छी लेट्स से गोटे टेक्निकल फिगर अच्छी इन्फ्लेशन 7.449 they are not going to
in exam, actual exam, they are not going to ask you 7.59. They will ask you 9.49. Now here they are they expect you that you should know this inflation is not 9.49 but in this range 7.4. ଏବେ ସେମାନେ 7.49 ଜାଗାରେ 7.59 ଦେଇକି ତମକୁ ଫସେଇବେ ନାହିଁ। UPSC ଏମିତି usually କରିବ ନାହିଁ। So whatever they are going to do, see, for this inflation ପାଇଁ ଏଇ 2 point ର difference ଟା ହଉଛି exaggeration. Point something will not be exaggerated. Similarly, in case of quality, fund କଥା କୁହାଯାଉଛି 500 crore ଆଉ 600 crore ଭିତରେ ଏଇଟା exaggeration ହବ। 5,000 crore this will be exaggeration. ବୁଝିପାରୁଛୁ କଣ କହୁଛି? Sir, ଏବେ actually ସେ fund ର limit 30,000 crore ହେଇଯାଇଛି। ଯେବେ increase କରାଯାଇଛି, ଯେବେ ଏଇ question ଟା ଆସିଲା ସେଟା 500 crore। 2021-22 Yes. 21 I think 2019 or 2021 2019 sir FY22 I think 21 post COVID। तो ନା ମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କି PYQ ଟା କୋଉ year? अच्छा PI को ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ contingency ଏଇଟା fund ର କଥା ଏଟା କଥା କହୁଛି। ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଏଇଟା କମ ଓ ଥିଲା ଆଗ ପରେ ଆସିଥିଲା ଏଟାକୁ ଆଡ କରାଯାଇଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଯେବେ ଆସିଥିଲା ଏଟା PYQ yes ଯେବେ yes ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ 500 crore ଥିଲା। ସେତେବେଳେ 500 ଦେଖ ଏବେ ଏମିତି 30,000 crore କଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏକ୍ସାକ୍ଟ କେତେ crore କରୁଛନ୍ତି। Still using this much is very difficult। ମାନେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ କଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଥରେ ବି 30,000 crore ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେମିତି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। କେତେବେଳେ ସପୋଜ 30,000 crore କେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ କେତେବେଳେ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ତ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। କଣ୍ଟିନଜେନ୍ସି ତ ଭୁଲିଆ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସେସନ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବେ। इमरजेंसी सिस्टम बसा ना। तो 30,000 crore you cannot spend in any case। 2-3 दिन में तुम्हें spend करनी चाहिए। But just to be on the safer side, they have increased it. But many times, my point is that they are doing this kind of thing. Be careful about facts and figures. Facts and figures, if UPSC wants, easily they can manipulate it, and usually they will exaggerate it. And exaggeration ta habo factor re habo in terms of factor, not in terms of some addition hoboni। factors mane 2 times 3 times 4 times 10 times এই वाला factor so sufficiently large হবো ଯୋଉଥିରେ କି ତମକୁ opportunity ଦିଆ ହବ you use some logic to eliminate। ବୁଝିପାରୁଛ? और इसमें ଯାହା note ରହିଛି ମୁଁ ଏବେ directly note ରୁ ହିଁ ପଢଉଛି। ମୋତେ यार बहुत सारा टाइप वाला परिवार मुझे टाइम मिल रहा है। ओके ठीक है so let's see the next question। now the next statement was given with respect to Paris climate deal। Paris climate deal voice clear ଅଛି? Yes, sir. Yes, sir. Paris climate deal UNFCCC COP21 right 2015। तो Paris climate deal related कोई statement गुड़ा दिया जाएगी पता है कि combination of options दिया जाएगी। First statement is that the agreement was signed by all members of UN and it will go into effect in 2017। Second statement, it aims to limit greenhouse gas emissions between or under 1.5 degree to 2 degrees Celsius above pre-industrial levels by 2100। Third statement is that developed countries acknowledge their historical responsibility and committed to donate $1,000 billion annually from 2020 to help developing countries blah blah cope with climate change।
Now tell me which statement raises green flag, which statement raises red flag. First statement, agreement Red signed flag. by all members of UN and it will go into effect in 2017. Why red flag? Sir, ମାନେ ଏଥିରେ ଦିଟା କନସେପ୍ଟ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଆଉ ରାଟିଫାଏ। ତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ରାଟିଫାଏ ହବ। ମେ ବି ଇଟ୍ ଇଜ ସାଇନ୍ ବାଇ ଅଲ୍, ବଟ୍ ଯୋଉ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇଫେକ୍ଟ ଇନ୍ 2017 ଦେଇଛି, ତ Right. ମେ ବି ଇଟ୍ ଇଜ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ Very good. ଲଜିକ୍। So ଏମାନେ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡେଫିନେଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, so that raises a red flag. ତ ଦେଖ ମୋ କହିବା କଥା କିଛି ବି ଆମେ ଏଥିରେ କରେକ୍ଟ ଅର୍ ରଙ୍ଗ ଏମିତି ଡିରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ମାରୁନାହିଁ ଇନିସିଆଲି. Later on as we progress in our class, I will simply mark these statements as, let's say कि ମୋତେ पूरा 100% ଜଣା भी नहीं, for your own understanding I will mark it like this. Okay? Right now I'm using these terms because I'm trying to explain to you these are all games of probability. Red flag, green flag means it is more likely to be correct. Red flag means it is more likely to be wrong. Now this itself shows कि ଗୋଟେ statement ପଢିକି ନା ବେଳେ ବେଳେ overall feeling ତମକୁ ହବ यार ये statement ଟା ବହୁତ extreme ମତେ ଲାଗୁଛି, ये statement ଟା ମତେ ବହୁତ reasonable ଲାଗୁଛି. ଯଦି ये statement ଟା overall ମତେ reasonable ଲାଗୁଛି, that means statement is a green flag, more likely to be correct. ଯଦି ମତେ ବହୁତ exaggerated ଲାଗୁଛି, extreme ଲାଗୁଛି, red flag. Second statement, second option, red flag or green flag. ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ। Very good. Others please participate. देखो अच्छा भाई तो ये क्लास रे एबे ऑनलाइन हम लाइव क्लास जहाँ करी माय सजेशन टू इज लाइव क्लास कर. सेकंड कथा होची कि क्लास रे पार्टिसिपेट करो, बिकॉज पार्टिसिपेट कले कोन बेले तुम ठीक कथा कहबो, बेले भूल कथा कहबो. ठीक कथा कहले तो भलो कथा, तुम कॉन्फिडेंस हो, भूल कथा कहले एथि भी किछ शिखियो. पार्टिसिपेट टोटली करिवो नाही यदि तुमको लागे कि हां बहुत थ्योरेटिकली मैं तो थ्योरी सब जानि गेली, देन एक्चुअल एग्जाम हॉल में जाई कि बस सेटा ही करियार. तो सेमिति यूजुअली हबनी. देखो एग्जाम हॉल में भी बेले बेले बहुत तुमको अंडर कॉन्फिडेंस लागे. जदि बहुत भलसे ये शिखिकी जाइए जिन प्राक्टिस एंड प्राक्टिस कर बहुत सारा टेस्ट सीरीज प्राक्टिस कर देन ओनली एक्चुअल एग्जाम हॉल तुम कर. अदरवाइज लेट मी टेल यू जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंटा करेक्ट मारिया को तो तुमको इजियर फील हम, रंग मारिया मो हाथ थर. यहाँ कि नहीं इनिशियल फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जानते तुमको डर लगे यार ये स्टेटमेंटा सब तुम भाव मे भी स्टेटमेंट भी करेक्ट, सब स्टेटमेंट तुमको करेक्ट लगे एंड तुम्हें ट्रिक रो नाम जब मन न पकई पार रंग बोली मारिया तुमको निश्चय हेजिटेट निश्चय कर. फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग कि पार्टिसिपेट, बिकॉज ये टर्म्स गुड़ा बार बार ये जो टर्म्स हम यूज करते एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग माइंड को आसने ही कॉन्फिडेंट है कि सेटा को एलिमिनेट करिए. अदरवाइज मुझे को डर लगे सेफ खेलियो एंड सेफ खेलला माने दैट इज एक्चुअली आंसर, बिकॉज यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट लेस नंबर ऑफ स्टेप. तो एंड थर्ड पॉइंट है कि जतबे क्लास होची तबले प्लीज गूगल गूगल करियो ना. तो ये जहाँ भी आम स्टेटमेंट को क्वेश्चन दूसरे आराम से गूगल करके साइंस आंसर लिखि दो कि ये तो एबीसीडी भीतर आंसर लिखि दो सी और सी होची आंसर. या तुम किसी लर्न करियो ना, ट्राई टू लर्न. आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू इम्प्रेस एनीवन हियर, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न. जदि भूल भी करियो एथि शिखियो. डोंट गूगल, जस्ट रीड एंड थिंक फॉर योरसेल्फ. जो आम कथा डिस्कस करूँ भाव कि मुझे जगह एक्चुअल एग्जाम हॉल जो गूगल ना मो पास कौन कर. So now देखो this is a very reasonable statement. In fact, 2100 is something which raises some doubt whether it is correct or not. But if you understand overall, UNFCCC रो तीनटा टर्म में समानकर गोल होती है, तो 2030, गोटे 2050, गोटे 2100. ये सिनारियो में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में सब ठीक सब टारगेट गुड़ा ये टर्म से दिए. दिस इज द लॉन्गेस्ट टर्म टारगेट दे हैव गिवन. ये हूँ मोस्ट बेसिक फ्रेमवर्क जहाँ पर से फर्दर फ्रेमवर्क गुड़ा तैयारी करते. So this basic framework was signed in Paris Climate Deal, right? COP21 2015 में साइन. तो वंस एटा को फिक्स कर दो तापर ताको अचीव करिया पे ये सब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट हम दो. फॉर एग्जांपल नेट जीरो टारगेट, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव गिवन नेट जीरो टारगेट बाय 2050. मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन तो आई थिंक अर्लियर दिया है. क्योंकि 2030 देखिए मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी वाला टारगेट, बहुत सारा मिड टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म टारगेट टू 2030 दिया है. तो ऑलरेडी वी आर इन 2023 टू 2024 भितर ये सब जहाँ भी है, इवन 2020 भी जहाँ है ये सब यार टारगेट बहुत सारा अच्छे 2030. So that means if you understand this, then you can guess कि 2100 will also be reasonable.
Now the third statement, you can tell me whether the third statement raises a green flag or a red flag. red flag. Why? $1,000 billion ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। Very good. Sir, $1,000 billion ଟିକେ ବେଶୀ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। $1,000 billion, you think ଗୋଟେ country GDP ହଉଛି ଗୋଟେ trillion ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର GDP around 4 trillion now। ତୁମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଲିୟନ वाला କଥା କହୁଛ ମାନେ ଗୋଟେ countryର GDP କଥା କହୁଛ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବଡ country ହେଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ countryର twice GDP ର twice around କହୁଛି। କୋଉ country ଏତିକି donate କରିବ? यार यूके ର ତ GDP ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ କମ ହେଇଗଲାଣି। So $1,000 billion, this is astronomically high. Actually, seମାନଙ୍କର commitment ଦେଇଥିଲେ $100 billion. And funnily enough, $100 billion को भी ସେମାନେ mobilize କଲେ ନାହିଁ। Their commitment, if you ମାନେ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଟିକେ knowledge base ଆମେ discuss କରୁଛୁ। Which COP do you remember? Copenhagen ରେ ହେଇଥିଲା। Copenhagen Conference of Party UNFCCC ରେ they had developed countries had committed to mobilize $100 billion annually to the developing countries. Why? Because of CBDR, Common but Differentiated Responsibilities. अंडर से मैं डिसाइड करती है हाँ हमें बेसी पॉल्यूट करती तो 100 बिलियन पर ईयर आमे मोबिलाइज करती बट एक्चुअली सेटकी कॉल इनफैक्ट सेटा कॉल नहीं बोली फाइनली आमे जो एबे आमे लॉस एंड डैमेज फंड तैयारी करू जदि एई फंड पूर्व फंडटा काम करथांदा लॉस एंड डैमेज फंड आमे काहे करथांदा सेटा कॉल नहीं बोली एटा को आमे जबरदस्ती करू so because of that reason also if you know this will logically be wrong so this is wrong first is also wrong what is the answer 2 1 and actually এই question में option थिला एमितिया 1 and 3 only 2 only 2 and 3 only 1 2 and 3 now suppose तुमको first statement टा भी तुमको clearly जाना पड़ू ना first statement टा छाड़ दी at least you are able to eliminate 3 को जदी eliminate आमे कर देबु ताले एमिति आंसर बारी but suppose एमिति भी आंसर 3 रे एगोला statement न था suppose गोटे statement था 1 only गोटे था 2 only गोटे था 2 and 3 only 1 2 and 3 only 1 2 and 3 तो ए दुटा आमे काटी देलु ए बी भितर वर्तमान suppose राउ एभला क्वेश्चन में कौन करियो देखो 1 only और 2 only अछि ताने either of these two will be correct now here suppose out किसी भी logic काम देला ना here you again go with intuition this is a point I want to explain to you so intuitively हमको कौन लगे what a statement overall तुमको कौन feeling दी second statement overall feeling वाला aims to limit greenhouse gas emissions between this degree and this degree above pre-industrial levels by 2100 okay this nothing seems unreasonable. But first statement, if you see, signed by all members of UN, if you go into section 2017, as soon as 2017, अब भावो 2017 सीधा अभी इफेक्ट पे चली था by all members, अब तो दुनिया कोड में कोड पहुंची overall feeling यारो तुमको तापर लगी होगी हमें भी दिस नॉट करेक्ट फाइनल आंसर वुड बी now there is another question WHO replace campaign yeah regarding this they have asked you questions first is the WHO replace campaign कौन first statement कहती कि this campaign is to replace all petrol and diesel vehicles by 2030 with electric vehicles EVs. Second is to eliminate industrially produced trans fatty acids from global food supply. Okay. Third statement is to provide protein rich food to children in government schools. Okay. Fourth is replace all untested antibiotics with WHO recommended antibiotics.
Now let's go with one by one. First option, replace all petrol and diesel vehicles by 2030 with EV. Red flag or green Red flag? flag. Sir, red Why? flag. Red flag. Why? Sir, Real- all petrol and diesel vehicle 2030 से तो eliminate करिया टे कष्ट होगा. तुम Extreme. 10 मास इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे चलती पुणी ऑल पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल ऑल पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स की 2030 सुधा रिप्लेस काहे करियो. सेकंड कथा मोस्ट इंपोर्टेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, why would world health organization be concerned about petrol and diesel vehicles? जैसे मैंने तो हेल्थ रिलेटेड काम करिए ना पेट्रोल डीजल से तो काहे काम. देखो एटा को इनडायरेक्टली तुम कहे कि पेट्रोल डीजल होची पोल्यूशन करूछंती जहाँ भी करूछंती फॉर दैट रीजन WHO इज बट ता ପାଇଁ ବି ଅନ୍ୟ ଇଏ ଅଛି ନା ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଇନ ଜେନରାଲ ବି ସପୋଜ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି दैट इज मोर इंपोर्टेंट UNFCCC ତା ଉପରେ କାମ କରୁଛି WHO ବେଶୀ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେड ଉପରେ କାମ କରୁଛି डायरेक्टली ଯୋଉଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି तो रिप्लेस कैंपेन वुड प्रोबेबली नॉट बी दिस बुझिहोची नॉलेज बेसिस रे भाबो बर्तमान नॉलेज बेसिस रे इफ यू नो दिस थिंग हमरो गोटे NEMMP नेम पॉलिसी गोटे थिला नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी समथिंग प्रमोशन इंडिया गोटे मिशन थिला यार अंडर फेम स्कीम जो आसला ଏବେ ବି ଚାଲିଛି फेम स्कीम ହେଉଛି इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन तो यांकर गोटे टार्गेट इंडियन गवर्नमेंट रो गोटे टार्गेट थिला कि बाय 2030 they had decided to have at least 50% of all vehicles should be hybrid and electric vehicles EVs. Now because এটা practically suitable ହେଲା ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ कि 2030 तक केबे भी एटा को हमें रिप्लेस कर परियो ନାହିଁ. So now this has been extended to 2050 or 2060 भला कोन मोर एग्जैक्टली मन नाही. Point is that this has been extended deadline. Why? Because there are many technological and practical challenges to hybrid and electric vehicles. Electrical vehicles को कहीं बहुत सारा challenges 2030 सुधा केबे भी हो परियो ନାହିଁ. बहुत सारा डिफरेंट कंट्रीज अच्छी जो मानक इलेक्ट्रिक व्हीकल से कहीं यूज करिए जो माने लेट्स से जो थे ऑलरेडी पेट्रोलियम रिच गोटे कंट्री अच्छे ये कहीं से रिप्लेस कर दो विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सस्ता मिलूँ पेट्रोल डीजल तो ग्लोबली यहाँ हवाटा वेरी डिफिकल्ट इंडिया होते भी चलो आम भाविनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली सब कुछ रिप्लेस कर दो प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भाविए से इम्प्लीमेंट केମିତି करेंगे WHO को आसिक गवर्नमेंट को फोर्स कर परियो कि सब रिप्लेस कर दियो बोली so this is a red flag. What about second statement? Eliminate industrially produced trans fatty acids from food supply. green flag. Very good. We will discuss in detail. Okay, fine. For the time being, let's assume it is a green flag. Why? Because try to understand. Because first of all, trans fatty acids from global food supply. Food supply is something food and health they are related. Okay. So we can think about it. Maybe this could be, but one red flag here is eliminate. So eliminate first of all it is replace but it eliminate so this is one reason why you can also call it a red flag. But let's for the time being हमको जाना नहीं तो इंडिया मार्क थर्ड स्टेटमेंट अच्छी प्रोवाइड प्रोटीन रिच फूड टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट प्रोटीन रिच फूड टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग सर एटा गवर्नमेंट स्कूल स्पेसिफिकली कहूची सेथिबाई बदे रेड फ्लैग एटा होती एग्जैजरेशन दिस इज व्हाट वी कॉल इट एग्जैजरेशन दिस इज नॉट एक्सट्रीम वर्ड एग्जैजरेशन इन द सेंस कि जब WHO कहबो ये रिप्लेस कैंपेन करियो गवर्नमेंट स्कूल काहे स्पेसिफिकली करियो तो सब स्कूल को करियो यदि किसी भी जिन प्रोब्लेम हो पिलाମାନଙ୍କୁ ताले गवर्नमेंट स्कूल पिलाଙ୍କୁ प्रॉब्लम प्राइवेट को भी प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड so why is this specifically mentioned government so this raises a red flag for that reason we will mark it for the time being as red flag. Fourth option replace all untested antibiotics with WHO recommended antibiotics. Green flag. Green सर flag एटा रेड फ्लैग replace all untested antibiotics with WHO recommended antibiotics. First of all untested antibiotic एमती अभी जो गवर्नमेंट को जाना पड़ता untested antibiotic ସେମାନେ ସେଟା ତ ଏମିତି ବି ଆଲାଉ କରିବେ ସେଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ବି WHO ହିଁ ସେଠି କାହିଁକି ଅଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଯାହା ଥିବ ସିଏ ହିଁ କାମଟା କରିବେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି କ'ଣ FDA ଯେମିତି US ର FDA ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ CDSC ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଡ୍ରଗ୍ସ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ମନେ ପଡୁନି ତ ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ବି ରେଗୁଲେଟ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ତ ସିଏ ସେମାନେ ହିଁ କାମ କରିବେ WHO ଆସି ସେଟା କାହିଁକି
and second point is all untested antibodies. So for that reason, it is raising red flag. So now you come to this part, maybe this could be more correct. Now you see related to these statements, it would seem more reasonable. Eliminate industrially produced trans fatty acids. Now the trans fatty acids विषय आउ टिके बेटर जानि थियो ताले बुझ परियो कि कहीं industrially produced trans fatty acid is very dangerous. Means bulk रे जोडा समान trans fatty acid यूज करा होची कि सस्ता फूड रे से सस्ता फूड रे जेहेतु देह को हम डायरेक्टली अफेक्ट करछि एलिमिनेट for that reason finally it will be taken market. But practically let me tell you कि तुम माने यदि एटा को एलिमिनेट कर देलो एंड एटा को एलिमिनेट कर लो ये दुइटा भीतर कंफ्यूज है कि एटा भी मारी देलो it is still understandable because you have still used some logic. Sometimes I had told you it's a game of probability. बेले बेले probability काम करियो बेले बेले काम करियो ना. Still जदि एई भलिया 10टा क्वेश्चन तुम 5टा क्वेश्चन ठीक करियो 5टा भूल करियो still you are getting net positive. देखो हमें जबरदस्ती किसी भी कहयानी कि माने कि एटा ही हम जानिथिलु लॉजिक एग्जैक्टली एठी लागियो बेले बेले लॉजिक हमकु कोन इन माने हाइंडसाइट हमकु लागियो कि लॉजिक ता परफेक्ट बिकॉज़ हमकु मते बे एग्जैक्टली आंसर कोन जाना तो मु तुमको जबरदस्ती कह दे कि आंसर तो एटा ही बट एक्चुअली सेटा न बेले बेले कोन हो कि ठीक अछि एग्जाम हॉल लो तुमको एटा ही बेसी रीजनेबल लागियो एटा मारि दो आंसर मारि दो दैट इज आल्सो अंडरस्टैंड बट माय पॉइंट इज इफ यू आर attempting more number of such questions then it will balance out बुझियो हमें किसी भी एठी जबरदस्ती कहयानी कि एई लॉजिक से सबले काम करियो यू डोंट नो कि एक्चुअल एग्जाम हॉल ले को लॉजिक ता केतले काम करियो नाउ लेट्स कम टू अनदर ट्रिक आई थिंक ए ट्रिक देखो पर नेक्स्ट क्लास उडा हम बहुत सारा ट्रिक एमती रिपीट करियो आई विल आस्क कि ए ट्रिक एटा को ट्रिक मते को so we are going to do that also for the timing let's move on to the next odd one now. First question is 2016 UPSC. Which of the following is not a member of Gulf Cooperation Council? Options are Iran, B. Saudi Arabia, C. Oman, D. Kuwait. Therefore, no, don't go tricky by this. Now this should be easy. This is not a member. So is it Iran? What? Option A. P. Option A. Why? Because Saudi Arabia Oman Kuwait ମାନେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଗେସ୍ କରୁଛି କି ସାଉଦି ଆରବ ଇରାନ ର ଟିକେ ପଲିଟିକାଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରହେ ସାଉଦି ଆରବିଆର ମାନେ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ Very good. तो देखो कितने different logic हमें use करते हैं. Now first of all, you know कि Saudi, Oman, Kuwait, all of these are friendly countries. Why you know? एबे ईमान को भीतर केवल झगड़ा सुन साउदी ओमान कुवैत स्मॉलर झगड़ा एते सीरियस वाला झगड़ा मेन झगड़ा कार हुए ईरान वर्सेस साउदी ईरान वर्सेस ओमान ओमान कर भी हुए ईरान वर्सेस इवन इजिप्ट ये सब काहे की हुए जानछ बिकॉज़ ईरान टा होची शिया कंट्री और बाकी तीनटा आगो जो हम देखिए बड़ा होची सुन्नी कंट्री सो नाउ इफ यू नो दैट এই তিনটা হচ্ছে সুন্নি কান্ট্রি এটা ইরানটা ହିଁ শিয়া কান্ট্রি তাহলে এটা কোন আছে ତାଙ୍କ କାଉନସିଲର ମେମ୍ବର ନଥିଲେ ସେ ଗ୍ରୁପର ମେମ୍ବର ନଥିଲେ ତ ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା ବାହାରିଯିବ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେରେ ଭାବ ସପୋଜ ତୁମେ ଏଟା ବି ଜଣାନି କି ଶିଆ କାଣ୍ଟ୍ରି ସୁନ୍ନି କାଣ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଟା ଜଣା ମୁଁ ଯେବେ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ଦଉଥିଲି ସେ ଟାଇମରେ ମତେ ବି ଜଣା 2016 ଏମତି ତ ଦେଇନଥିଲି ବଟ୍ ସେ ଟାଇମରେ ମତେ ବି ଜଣା ନାଉ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଅବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଓମାନ ଏଣ୍ଡ କୁୱେତ ଏଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ଯାଅ ନାଉ ଥିଙ୍କ ଅବାଉଟ୍ ଇରାନ ଏଣ୍ଡ ସାଉଦି ଆରେବିଆ usually you at least you would have seen in many articles IR वाला आर्टिकल में सब पढ़ुव मिडिल ईस्ट रिलेटेड जहाँ भी झगड़ा हुए से ईरान और साउदी अपोजिट एंड रे था सब झगड़ा चलते जदि दुई भर एत मानने एनिमिटी अच्छी दुई जन सडनली गोटे ग्रुप मेम्बर
एबे लॉजिक कौन बुझी पारछ दुई जण जाक केबे भी सांगरे गोटे ग्रुप रो मेंबर हेबे नाही ता माने तो एटा हम एक्टिविटी ए दुटा काटिंग दे परियो ता माने होची ए दुटा भितर ही गोटे आंसर हेतियो काहे कि बिकॉज़ जदी गोटे कंट्री से ग्रुप रो मेंबर हबो ताले आ गोटे कंट्री से ग्रुप रो मेंबर हबो नाही आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक Yes, sir. जदि भाव एटा दिस इज अनदर ट्रिक व्हिच इज समटाइम्स आल्सो नोन एज म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी ए ट्रिक भी हमें देखी तो म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी जेमति म्यूचुअल इनकंपैटिबिलिटी भी ता माने होची ऑप्शन 1 का भितर केते कंपैटिबिलिटी अछि जदि दुईटा ऑप्शन भितर कंपैटिबिलिटी नाही ताले ता भितर जे कोनसी गोटे करेक्ट अन्यटा हो जदि कंपैटिबिलिटी अछि ताले दुईटा को करेक्ट और तीनटा को करेक्ट जहां भी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन दीजियो ताको हम नहीं माने म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी हिसाब से जदि ए दुईटा भितर कंपैटिबिलिटी नाही ताने गोटे गोटे मेंबर ही नथि तो देन यू विल थिंक फर्दर कि एटलीस्ट तुम तो 50-50 तो एलिमिनेट कर सकते देन तुम फर्दर भाबी कि ईरान और साउथ भितर कोन हेते पारे तो म्यूचुअल इनकंपैटिबिलिटी हमें पर फॉर द टाइम बिंग लेट्स डिस्कस अ फ्यू मोर ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन आउट पीवाई की आसला कि व्हिच आर द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल ऑप्शन 1 हला कनाडा ऑप्शन 2 हला फिनलैंड ऑप्शन 3 हला डेनमार्क ऑप्शन 4 हला जापान now there is a combination of which of the following is correct संख्या को combination चला 1 2 only 1 2 and 3 only so we are not going into that मैं कहूँ कि तुम्हें ए थ्रू बाहर करा जहाँ भी था you tell me कि which of the following are members of Arctic Council yes anyone Maybe Japan Canada, Finland, and Denmark or Japan होगा. Denmark और Japan होगा what is the reason any reason answer to बेसी important logic logic कौन है यार कारण जापान टा पैसिफिक रे रहउते एटा तो एक में बदन हुआ काउंसिल लगा very good Denmark का कोठू डेनमार्क टा अच्छा तो को फिनलैंड जदि तुम कहलो ताले डेनमार्क कहीं होगा फिनलैंड डेनमार्क तो पूरा पाखरे अछि in fact there is a concept called Scandinavian countries है ना Scandinavian countries भितर माने जाउछंती डेनमार्क फिनलैंड स्वीडन आइसलैंड any others please guess किसी लॉजिक को कौन होबो कौन होबो Sir, except Japan also. except Japan also होबो okay any other guesses आउ किसी लॉजिक अछि सर ये if सब you see this अछंती केवल जापान को छाड़ी बोधे एथिरे बहुत क्लियरली एथिरे वर्ड को एसोसिएट करो आर्कटिक काउंसिल मींस आर्कटिक को लागि थिया कंट्रीज गुडा ही आर्कटिक काउंसिल मेंबर है जापान आर्कटिक को लागि जापान आर्कटिक आखबा करे भी नहीं आर्कटिक हला ए एरिया टा राइट रशिया भी लागि देखो रशिया लागि चाइना भी लागि रशिया तले चाइना चाइना पाखरे एपटे हला जापान तो जापान तो आखबा करे किसी नहीं जापान जापान कहीं के आर्कटिक कंट्री मेंबर हो बट इफ यू अंडरस्टैंड कनाडा रो जो नॉर्दर्न कनाडा टा ये जो एंटायर ए बेल्ट टा ना एटा पूरा आर्कटिक सी भितरे आस एठी एगुडा सब आर्कटिक सी रो इन्फ्लुएंस भितरे आस राइट 66 पॉइंट माने हाफ डिग्री एतिकी डिग्री नॉर्थ ऊपर जो भी कंट्री गुडा अछंती एटा हला आर्कटिक सर्कल ऊपर जो गुडा अछंती से माने समस्त आर्कटिक सर्कल रो मेंबर होती सॉरी आर्कटिक काउंसिल रो मेंबर होती सेतरे स्कैंडिनेवियन कंट्री समस्त आस एटा होची एटा 15 फाइंड्स FINDS फिनलैंड नॉर्वे डेनमार्क आइसलैंड स्वीडन एमाने समस्त होचंती तार मेंबर कनाडा इज आल्सो ए मेंबर भाई कनाडा रो बहुत लार्ज पार्ट ऊपर लागी इन द सेंस कि सेटा होची माने आर्कटिक इन्फ्लुएंस अंडर रे आसु बट जापान आसु नहीं तो जापान को काटी देले बाकी तीनटा जोटा आसु एगुडा होची दीज आर द मेंबर
Russia is also member. Canada is a member. या विषय तापर फर्दर आम ऑप्शंस रिसर्च क्लास रे डिस्कस करी ऑप्शंस रिसर्च से आम डिटेल डिस्कस करी फॉर एग्जांपल आर्कटिक काउंसिल कौन 1996 ओटावा कन्वेंशन होता कौन होता तापर काउंसिल फॉर एग्जांपल इंडिजिनस पीपल कौन इनिशिएटिव अच्छे ये सब जिन आम डिस्कस करी ऑप्शंस रिसर्च क्लास फॉर द टाइमिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रिक्स बुझियो Yes, sir. another question please. Which of the following is not a sub-index of World Bank's ease of doing business? Ease of doing business. A is maintenance of law and order, 2019 QIQ. B is paying taxes. C is registering property. D is dealing with construction permit. Now you tell me, first option, red flag or green flag? एबे छाड़ एबे रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग नहीं एबे ओवरऑल चारटा पढ़ी कि भाबो कौन है करी लॉजिक लॉजिक लगे सर परमिट टा सब लोकल गवर्नमेंट दिए किंतु एटा तो इंटरनेशनल लेवल लो अछि ओके वेरी गुड दिस कुड बी वन ऑफ द लॉजिक व्हाट एल्स एनी अदर लॉजिक Sir, ease of doing business रे law and order maintenance तो वर्ल्ड बैंक न आसी पारे वेरी गुड व्हाई सर लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिसिंग रे जाए तो एपटे डूइंग बिजनेस रे हम तो कौन सुपर को लॉ एंड ऑर्डर एक्सीलेंट लॉ एंड ऑर्डर टा यूजुअली पुलिस जो काम है इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू डूइंग बिजनेस व्हाई बिकॉज़ लॉ एंड ऑर्डर भलो थिले बिजनेस करे सुविधा हबो लॉ एंड ऑर्डर खराब थिले बिजनेस करे असुविधा हबो बट कथा होची कि इज इट डायरेक्टली अफेक्टिंग एनीथिंग पता नहीं सब जिन कथा पेइंग टैक्सेस रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट डायरेक्टली एटा तार बिल्डिंग के ऊपर अफेक्ट करियो बिजनेस सपोज करिए से माने जो भी जगह करिए कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं करता किसी बिल्डिंग का लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली नो दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट विल डू एंड विच विल इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस ये तीनटा को डायरेक्टली रिलेटेड टू डूइंग बिजनेस इटसेल्फ law and order is indirectly related. So therefore, this will be the odd one out. Therefore, this will be the maintenance of law and order. अब सब देखो टैक्स पे करिया गम जहाँ भी बिजनेस काम करूची प्रॉफिट मिलुची टैक्स पेमेंट तो करिया राइट सपोज गोटा कंट्री बहुत हाई टैक्सेस माने इंपोज कर कॉर्पोरेट टैक्स देन इट विल डायरेक्टली अफेक्ट देयर डूइंग ऑफ बिजनेस जैसे बाहर कंट्री रो कंपनी माने आसी है रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बेसी टाइम लागु डूइंग बिजनेस खराब हो गला directly affecting you. Construction permit नहीं तो मतलब business start कोई करिए unless you are an online business. So maintenance of law and order would be the odd one out. Now let's discuss another question. बुझिए तो कौन कौन सी logic? Very easy question. What's the answer? सर कॉफी कॉफी हवा Very good. Why? कॉफी टा गोटे कमर्शियल क्रॉप टा Excellent. कमर्शियल Coffee is टाइप a commercial crop. बाकी सबूड़ा देखो these are all agricultural और horticultural agricultural crop. ମାନେ ସବୁ ଖାଇବାର ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଁ ନୁହଁ ଯୋଉଟା ୟୁଜୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ବି କରନ୍ତି ବଟ୍ କଫିଟା କଣ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ କରାଯାଏ ଯୋଉ ଚାଷୀ କଫି ଚାଷ କରୁଛି ସେ କଣ ଗରିବ ହେଇଥିବ କି ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଫାର୍ମର ହେଇଥିବ ରିଚ୍ ଫାର୍ମର ଅର୍ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ
ताको आम एमएसपी कहीं दबु जी धान चाष करुच्ची राइस चाष करुच्ची एमएसपी दरकार पल्सेस करुच्ची एमएसपी दरकार डाली लगे एमएसपी दरकार कॉफी जे करुच्ची एमएसपी कौन दरकार तो दिस इज ऑड वन आउट ता छड़ा आउ भी भाव कि आम यूजुअली एग्रीकल्चरल क्रॉप्स रिलेटेड सब यही सब टर्म गुड़ा स्वीट राइस पल्सेस कॉफी यूजुअली आम डिस्कस करूना because this is not a main crop of India, right? Major crop it out on. So in that way also you can eliminate. Okay. Another question. Rule of Law Index is published by A. Amnesty International, B. International Court of Justice, C. Office of UN Commissioner for Human Rights. Okay. D. World Justice Report. Now you tell me what should be the answer. Suppose you don't know and you have no idea about what is the rule of law index. Answer कौन होगा? either A or B. सर डी। A or B? B. Why A or B? What do you think? Sir, I said A or D, like Amnesty International or World Justice Report. Because B A or option B? रे जो International Court of Justice अच्छी सेटा मतलब लाଗୁନି କିଛି index से publish करे बोली से तो सेटा ମୁଁ eliminate କରିବି ଆଉ then option C भी mainly I think human rights ऊपर तो ମାନେ Very ମାନେ good. ସେଟା instinct ମାନେ ମୋର gut feeling କହୁଛି କି A ଆଉ D ଭିତରେ ଗୋଟେ Very good. बेले एमितिया गट फिलिंग एबे बुझछ देखो गट फिलिंग बहुत टाइम रे एई सब आइडिया रू भी आसीयो कि तुमको ओवरऑल गोटे फीलिंग हो कि मत लागुची एटा करेक्ट और एटा रॉन्ग so in exam you have to trust your gut yeah, someone else was saying D why D ସାର୍ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆସିଥାଏ ମେଜରଲି ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। very good excellent देखो हाँ एटा सर केते इजीली आंसर टा सॉल्व हो देखो एसडीजी रिपोर्ट यूएन बाहर कला एसडीजी रिपोर्ट सेथिरे थिबो एसडीजी इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट तार अंडर थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से इंडेक्स रिपोर्ट रे कौन करे से रिपोर्ट लिखते एआई है कि फाइंडिंग्स अछि तापर गोटे इंडेक्स बाहर कर देछि सब कंट्री रो एटा हला ओके नीति आयोग बाहर करछि सपोज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट एमपीआर ता अंडर रे अछि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट अंडर रे अछि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बुझि होछि तेना वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जदि बाहर तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ता अंडर रे आउ गोटे वे रे भाबो ए तीनटा याक बॉडीज अछि ऑल थ्री आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज जहाँ भी कहते एमनेस्टी इंटरनेशनल इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गोटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इट इज ए बॉडी बट दिस इज ए रिपोर्ट so in that way also it is odd one out logically केमती एलिमिनेट करता एमनेस्टी इंटरनेशनल कथा छाड़ दियो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस माने एक्चुअली बहुत काम तांकर अछि ସେମାନେ एक्चुअली एडजुडिकेशन କରନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ବସି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବାହାର କରିବେ କିଛି ବଡି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି କିଛି ବଡି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରନ୍ତି ଏଟା କାମ କରିବା वाला ବଡି ଇଏ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ वाला ବଡି ନୁହଁ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एमती भी होगा ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एक्चुअली कौन की ଲାଗୁଛି କି ଏମିତି ନାମରୁ ବି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକର ଅଫିସ ବଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏଜ୍ ମେନି ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଟା କେତେ ରିପୋର୍ଟ କୁ ବି ପବ୍ଲିଶ କରିବ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋଟେ ବଡି और ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା रिपोर्ट बाहर करती लेट्स से कि ऑक्सफाम ये बहुत सारा रिपोर्ट बाहर कर है ना सेमितिया सपोज ओईसीडी ये एमाने रिपोर्ट बाहर कर ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स काहे बाहर कर ये एक्चुअली एक्शन नबो अन्य रिपोर्ट पढ़ी की ता ऊपर एक्शन so in that sense you can easily eliminate B and C then there will be difficulty in eliminating A and D मना करूँ amnesty एबे doubt हो तुमको amnesty international और world justice report but at least you can eliminate these two logically also है ना
बुझियो कि Yes, sir. now one last question for this, let's do it. Suppose the question is, you are not likely to find Royal Bengal tiger in which of the following national parks? This is the question. UPSC question, no, my question. सुंदरबन नेशनल पार्क एबे इसी सेम क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करी डिफरेंट बुझिया ट्राई करा डिफरेंट लॉजिक हला ई सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मु फ्यूचर में चेंज करके देबी नहीं टेल मी कि व्हाट शुड बी द आंसर बांधवगढ़ नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर हेमिस हेमिस व्हाई सर हेमिसटा स्नो लेपर्ड ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଦେଖିବା ସେଟା ନର୍ଥର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ମାନେ I think ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲଦାଖ ସେଇ ସାଇଡରେ ଅଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦରବନଟା ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡରେ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସର ମେନ୍ ହାବିଟାଟ ଆଉ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ का कान्हा आई थिंक ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ଯୋଉଠି ଟାଇଗର ପପୁଲେସନ ଅଛି ତ आई थिंक ସେଠି ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଥିବେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଥିବେ so वेरी by गुड that logic କୋଲ୍ଡ एक्सीलेंट टाइगर रॉयल बेंगल टाइगर ରହିପାରିବନି ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? वेरी गुड एक्सीलेंट यस रही परिबो रॉयल बेंगल टाइगर दिस इज अ ट्रॉपिकल स्पीसीज देखो रॉयल बेंगल टाइगर इनफैक्ट साइबेरियन टाइगर भी अच्छी आउ टाइगर रो माने से स्पीसीज का सेम स्पीसीज पाया गला सेम स्पीसीज माने सेमती बेसी किसी डिफरेंस नहीं इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्नो लेपर्ड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्नो लेपर्ड टाइगर टाइगर इज अ डिफरेंट पांथेरा टाइग्रिस बट टाइगर इज मोर प्रिफर्ड हैबिटेट तार कौन हो ट्रॉपिकल एरिया टी गरम जगह रे हो देखो टाइगर गोटे लार्ज टाइप ऑफ ये रे रही पारे इकोसिस्टम रे रही पारे जेमती ट्रॉपिकल जंगल रे रही पारे स्वाम्प्स रे रही पारे सुंदरबन से रही पारे सुंदरबन जो मैंग्रोव्स रे सेतरे भी टाइगर अछि हमर भितरकनिका रे भी टाइगर अछि बांधवगढ़ नेशनल पार्क एगुड़ा तो नॉर्मल जंगल गुड़ा बट हैव यू हर्ड अबाउट कि गोटे कोल्ड डेजर्ट रे रॉयल बेंगल टाइगर रहिबार जानछि कोल्ड डेजर्ट रे को टाइप रो टाइगर आसे सेठी आसे स्नो लेपर्ड ए टाइप रो आसे सो दैट मींस कि हेमिस नेशनल पार्क इज द ओनली ऑड वन नाउ जदि जियोग्राफिकली भी देखियो वर्ल्ड वेस्ट बेंगल आउ मध्य प्रदेश दीज आर तुम यदि जानिथिबे थ्री कान्हा नेशनल पार्क बांधवगढ़ होची दुसरा मध्य प्रदेश वेस्ट बेंगल सिमिलर ठीक है लोअर लैटिट्यूड लद्दाख का होची हेमिस नेशनल पार्क का लद्दाख का होची बहुत हायर एल्टीट्यूड फॉर दैट रीजन दिस इज द ऑड वन तो हेमिस नेशनल पार्क है हमको मिल गया now today I'm going to give you one last trick for today. So we are going to continue discussing it in next class also. तो बहुत सारा ट्रिक नंबर ट्रिक है 4 नंबर ट्रिक ता विषय टिके भाबियो एंड भाबी मते कहयो कि कोन कोन एग्जांपल ता ऊपर हेई पारे पीवाईक्यू देखि मते कहयो कि एटा ए टर्म रे यूज है ए ट्रिक हिसाब रे यूज है दैट ट्रिक इज नोन एज एक्सट्रापोलेशन माने कोन एनीवन इट ऑन द समथिंग yes व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रापोलेशन ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ରାଫରେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ फोर्थ ଆଉ फिफ्थ ପଏଣ୍ଟ କୁ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରୁ ସେଇଟା वेरी गुड एक्सट्रापोलेशन माने होची कि बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स you are trying to extrapolate or conclude another fact जहाँ विषय तुमको बेसी आइडिया नहीं बट आम कहूँ यहाँ जब एमतिया यहाँ भी सिमिलरली सेमितिया हो so for example what is an example let's say कि यूनियन में कौन हुए जमी अच्छे प्रेसिडेंट अच्छे प्रेसिडेंट इज द रबर स्टैम्प एग्जीक्यूटिव हेड अंडर अच्छे पीएम का माने ये he is the part of council of ministers similarly state रे कौन अच्छे गवर्नर
and he is the executive head, which is the rubber stamp. Tanko under CM. CM is the part of the State Council of Ministers. Now, if you know how president is elected, what is the relation between president and prime minister? For example, let's say prime minister will advise the president in all matters. Council of Ministers semane bhi president को inform करिए. President जहाँ information required से council of minister or prime minister को directly document करिए. A similar thing will also happen in the state. Governor will be the head of the state, but practically CM will be the head, and governor can call for any information from the chief minister, and the chief minister will advise the governor in every day-to-day basis have you work. So my point is extrapolation is कौन हो यदि यूनियन गवर्नमेंट विषय को बहुत भल से आइडिया बट क्वेश्चन आस स्टेट गवर्नमेंट विषय you use the idea of union government to answer the state government वाला क्वेश्चन लेट्स से कि सपोज तुमको बहुत डिटेल स्टेट गवर्नमेंट विषय जाना है बट गोटे ऑप्शन आसी गवर्नर ऊपर वो स्टेटमेंट के फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि गवर्नर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट तो तुम्हें एक्स्ट्रापोलेशन यूज करके भी एटा को एलिमिनेट कर दो व्हाई बिकॉज़ प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल प्रेसिडेंट इज voted by the parliament members of parliament and other माने तब जो presidential college को जो माने भी था so similarly governor भी similar ही थे पर or at least governor will not be directly elected by the people which is secondly the president can call for information from the prime minister governor can also call for any information from the people so this is the meaning of extrapolation now let's see some examples how to use extrapolation in some kind of questions historical perspective भी आपको मिल रहा है এটা ওটা subset of extrapolation. From this angle, try to answer this question. There was one QYQ staple commodities of export by East India Company from India, sorry, from Bengal in mid 18th century. Where which of the following? Option अच्छी raw cotton, oil seeds, opium. B is sugar, salt, zinc, lead. C is copper, silver, gold, spices, tea. Our mic on. Please mute your mic. Cotton, silk, saltpeter, opium. 2018 Now extrapolate and try to answer. See what could be the answer. Because the East India Company, Bengal, who commodities to export करथला mid 18th century. तार audio on please mute. Yes, anyone? सर ए हबो कि Thank you. सर कारण एई तीनटा जिंस ही चाष करा जाउतला से माने आसीबा आगुरु Are you sure? Opium को to India D transfer करथला. Is opium native to India? ना सर चाइना रे मध्य कराउतला सेटा केवल चाष ओपियम वार्स विषय सुनते कि नहीं चाइना रे ओपियम चाइना रे भी एक्चुअली इंडिजिनस थी नो मते डाउट एक्चुअली ओपियम चाषी में लार्ज स्केल सेटा प्रोबब्ली दैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस सॉरी इन चाइना बाय ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी करथला तापर समाने चाइनीज लोगों को ही एडिक्ट करे देले ओपियम तो तापर से ओपियम वार्स देखला तांकर चाइनीज लोक माने ही रेबेल कले अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी बट जनरल जेमति की टी ओके Now, tea is also actually not indigenous to India, but tea was introduced by the EIC. So, in that way, although it was not part of it, it's not a species of India, but still it has a long tradition of being cultivated in India. And सेरा को इंडिया रो एक्सपोर्ट भी कराओ, but ओपियम को केबे एक्सपोर्ट कराओ तो सुन ओपियम तो होबनी आशा की बुझी कि ओपियम वाला ऑप्शन हमें काटी दे ए और डी हमें काटी दे
Now the question is B और C भितर which is more likely? Sugar, salt, zinc, lead, copper, silver, gold, spices, tea. C. C. Why? Sir, zinc Spices ଆଉ and lead tea. ବହୁତ ମିନେରାଲ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଟି ଆମର ସ୍ପାଇସେସ୍ ଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଆଗରୁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ବି ହଉଥିଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସ୍ପାଇସେସ୍ ଅଣ୍ଡର ବେସିସ୍ ଟା ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ। Very good, excellent. Ellora, right? ୟେସ୍ ସାର୍। देखो एक्सट्रापोलेशन माने होची कि किसी गोटे जिनसर आमे माने गोटे अलग जिनसर आमे डिराइव करिया करंट जिनस एथिरे एक्सट्रापोलेशन कोन जदि पास्ट रे आमे जानछु किसी जिनस कल्टीवेट माने सॉरी एबे प्रेजेंट रे किसी जिनस कल्टीवेट अछि पास्ट रे भी सेटा कल्टीवेट प्रोबेबली होथबो व्हाई बिकॉज़ पास्ट को ही आछो प्रेजेंट देखो ए सब जिनस रे इंडिया एबे भी रिच कॉपर सिल्वर गोल्ड स्पाइसेस टी सब रे होची स्पाइस रे भी इंडिया रिच टी रे भी रिच गोल्ड सिल्वर कॉपर जिंक और लेड पुणी भाव मिड 18th सेंचुरी जिंक और लेड कहीं एक्सपोर्ट करा जिंक और लेड रे एते भी कोन भंडार इंडिया रे अछि सेटा हम जानछा इंडिया रे जेंति आमे सुनिछु कोल बहुत अछि नेचुरल गैस ना कोन कोन माने बहुत सारा मेजर माइंस एंड मिनरल्स बहुत अछि सिल्वर गोल्ड सब किछ अछि जिंक और लेड रे बहुत भंडार इंडिया रे अछि जदि एबे भी तुम सुनिया को पाउना पास्ट थिला बोली काहे भाबु दैट इज द एक्सट्रापोलेशन ओपियम एबे भी इंडिया रे चाष किछ हो नाही आगुर केबे हेइतले भी आमे हिस्ट्री रे पढि था किंतु ए सब जिंस आमे पढिछु कोना कोना कॉपर सिल्वर गोल्ड स्पाइसेस टी देयरफॉर दिस विल बी द आंसर टी रे इनफैक्ट तुम जदि भाबो कि टी रे जति टी गार्डन्स ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट में इंट्रोड्यूस करेथिले दार्जिलिंग आसाम रो बहुत जगह इंट्रोड्यूस करेथिले आसाम रे बहुत सारा एबे भी जो तांकर माइग्रेशन क्राइसिस दैट बिलोंग माने कम्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी जेतले सन चीप लेबर मान को मिल नथला आसाम लेस पॉपुलेटेड थिला यूपी बिहार रो तो माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो लोक माने नेकी जाउथिले चीप लेबर ये सब जिन तुम एक्सट्रापोलेट काम करार मीन प्रेजेंट रु आम डिराइव करे कि पास्ट जब प्रेजेंट रे मिथे अछि पास्ट रे सेमता हितो सिमिलरली जब पास्ट रे किछि प्रेजेंट रे भी सिमिलर तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एक्सट्रापोलेशन गोटे सबसेट होता हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आम बहुत जगह एमती एक्सट्रापोलेशन करू माने गोटे टाइप रो कॉन्टेक्स्ट रो आम बुझिया कि एई टाइप रो कॉन्टेक्स्ट रे एमती हितो वाला आउट जगह रे एमती हितो एक्सट्रापोलेशन रो आउ गोटे एग्जांपल दउ लेट्स से कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल बहुत जगह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखिए ସେମାନେ कौन हम फर्स्ट ସେମାନେ गोटे कन्वेंशन और मीटिंग करा दियो से मीटिंग रे गोटे कंसेंसस बाहरियो सेठी कंसेंसस बाहरले हेड गोटे एग्रीमेंट साइन हेले गोटे परमानेंट बॉडी क्रिएट हो गोटे परमानेंट बॉडी क्रिएट हेले तारो लेट्स से गोटे एग्जीक्यूटिव कमिटी गोटे रहियो आ गोटे पॉलिटिकल कमिटी जोटा सेटा तारो पॉलिटिकल हेड हेतियो ता अंडर गोटे एग्जीक्यूटिव कमिटी एटा ब्यूरोक्रेट्स माने बसिए एथिरे से कंट्री रो हेड माने हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट माने आसिकी बसिए ସେମାନେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଜେନେରାଲ फ्लो चार्ट if you understand this you can extrapolate it to attempt many questions which are related to international organizations for example suppose हमारा गोटे स्टेटमेंट देबे कि let's say कि WTO was established after the Uruguay round of negotiations which led to Marrakesh Treaty. This is one statement. Second statement is कि WTO रो गोटे एमदी एग्जीक्यूटिव बॉडी गोटे अछि आ सर्टेन एमदी बॉडी अछि तो ये दुईटा को स्टेटमेंट करेक्ट हो बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि दिस इज द जनरल फ्रेमवर्क किसी गोटे मीटिंग कन्वेंशन हम कंसेंसस बाहर एग्रीमेंट बाहर तापर गोटे बॉडी क्रिएट डायरेक्टली बॉडी बहुत क्रिएट होवार चांस बहुत कम अछि राइट तो हे जो उरुग्वे राउंड पर हे मार्केट गोटे ट्रीटी किसी गोटे हे ट्रीटी पर एटा साइन तापर कहा गला कि बॉडी रो ए माने ए भला सब तारो ऑर्गेनाइजेशन सॉरी माने कंपोजिशन ऑफ पार्ट्स अछि तो हे जो असुविधा कम अछि बुझी होछि कोन को दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रापोलेशन सिमिलरली जदि गोटे जगह रे किसी गोटे सर्टेन फ्रेमवर्क में यू अंडरस्टैंड कि दिस इज द फ्रेमवर्क बट एक्चुअल स्टेटमेंट जहाँ दिया है कि किसी गोटे डिफरेंट अछि यू नो कि इफ दिस इज द जनरल फ्रेमवर्क बाय एक्सट्रापोलेटिंग इट दिस कैन नॉट बी द स्टेटमेंट ओके तो तार भी हमें एग्जांपल लिख लेट मी फाइंड अनदर एग्जांपल we will wrap it up after this गोटे क्वेश्चन आसला कि
consider the following statements with respect to the chief secretary of a state, CS of a state. Which of the following are correct? First is chief secretary of the state is appointed by the governor. Second is chief secretary of the state has a fixed tenure. Now the options are A hochi one only, B hochi two only, C hochi both are correct, D hochi neither are correct. You tell me what logic can you use? Sir, neither. Neither. Why? Sir, option 2 तक बोली होगा because जब the chief minister चाहती I think से change से ताका tenure है ताका fixed tenure नहीं and Right. okay appointed by governor की मतलब So first I think wrong है. Appointed तो चीफ मिनिस्टर के इसमें करता है. एटा से टाइम रे बहुत कंट्रोवर्सी हेतला किसी पिला मारी के आस्ले करेक्ट बोली. By the way, this is not a very good माने स्टेटमेंट ही फ्रेम टिके भूल भाबरे करा हेतला. ठीक अछि, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. हां को सर मत लगुच चीफ सेक्रेटरी जड़े मे बी आईएएस थांती तो आईएएस को गवर्नर तो स्टेट रे के अपॉइंट करिवे नहीं बोधे तो से पई भूल पारे आ तांकर फिक्स टेन्योर रहिबार भी केटी सुनी नहीं तो नाइदर हे पारे. देखो यार लॉजिक होची फर्स्ट ऑफ ऑल जहां भी अपॉइंटमेंट लेटर आसियो गवर्नर को सिग्नेचर भितर थाए बट दैट डज नॉट मीन कि एवरीवन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एक्चुअली से टाइम रे काहेकि कंट्रोवर्सी हेतला बहुत पिला पूरा इमोशनल है कि गोटे क्वेश्चन से फाइट करतो मने बहुत पिला मारी के आसले अपॉइंटेड बाय गवर्नर से टाइम रे कोन हला मोटा ग्रुप रे थिले मु देखि भितर जणे सेही टाइम रो जे कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी थिले तांकर अपॉइंटमेंट लेटर टाक भी डायरेक्टली पोस्ट करतल कि देखो ए तळे सिग्नेचर करैछन्ती गवर्नर. देखो गवर्नर तो बिकॉज ही इज द माने रबर स्टैम्प एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट फॉर दैट रीजन ही विल साइन द अपॉइंटमेंट लेटर इवन तुम जो सर्विस रे जॉइन करियो तुमरो जानते कि नहीं तुमरो भी अपॉइंटमेंट लेटर रे भी गवर्नर साइन करती बट दैट डज इट मीन कि यू आर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द गवर्नर तुम्हें ओएस तो गवर्नर तुमको अपॉइंटमेंट दी. The reason is the Constitution says that all executive actions shall be taken in the name of President in case of center and in the name of Governor in case of state, right? But that does not mean that Governor or President are appointing everyone. So CSS, for example, now extrapolation count. Center in the Cabinet Secretary. Cabinet Secretary is key appoint for Cabinet Committee on Appointments. Who is the head of Cabinet Committee on Appointments? Prime Minister. Prime Minister. So practically, Prime Minister is choosing who is going to be his or her cabinet secretary. So extrapolation कौन होगा? Similarly, probably chief minister will decide who is going to be chief secretary. Just because governor is signing it does not mean कि governor is appointing him. Secondly, how CSS has a fixed tenure. Fixed tenure usually कहाँ रहता है? Constitutional post जो गुड़ा की माने which from which we expect neutrality. For example, ଯେମିତି କି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ एनएचआरसी रो मेंबर्स मान ओके एमाने एथिरे समान लिखा है फिक्स टेन्योर है इवन सीबीसी सीबीआई एमान कर भी चलो एबे तो नाही कहया कोले बट जो हम न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट करू बट चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी द पर्सन इज नॉट एक्सपेक्ट टू बी माने मु कोनी पॉलिटिकली बायस बट दिस पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बी a part directly a part of the government system government of the day and therefore should be under the control directly under the control of the chief minister or जी भी तार माने पॉलिटिकल हेड जी भी तो तांकर केबे भी फिक्स टेन्योर होबो नै इनफैक्ट समान को केबे भी अपॉइंट करा जी पारे केबे भी रिमूव करा जी पारे तांको जदि हम फिक्स टेन्योर देई देबो ताले से गवर्नमेंट को तो सीएम चले कैबिनेट सेक्रेटरी सीएम पीएम सीएम अपॉइंट करियार पॉइंट तो फिक्स टेन्योर रहे नाही तो एई क्वेश्चन आंसर होची नीदर जब मैं कैबिनेट सेक्रेटरी चैप्टर टा भलो से पढ़ दी तो ताले चीफ सेक्रेटरी विषय भी एक्स्ट्रापोलेट करी कि आंसर
ବୁଝିହଉଛି କ'ଣ କୁହାହଉଛି? Yes, sir. Yes, sir. ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ବିଷୟରେ ପଚାର। ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ତା ଭିତରୁ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରେକ୍ଟ କ'ଣ କହିବ? ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହାୟର ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ precedence than other state ministers. Second is Deputy CM. Deputy CM finds mention in the Constitution. Then the option similarly ଅଛି one only, two only, both, neither. Tell me. Logic use करो. Order of precedence ଜାଣିଛ ତ? କାହାର rank କାହାଠୁ ଉପରେ? Then not. What do you think? Sudarshana, first statement, red flag or green flag? The red flag. Red. Thank you. Other state ministers. ଯଦି ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଜିଗ୍ନେସନ କ'ଣ ଥାଏ? ମିନିଷ୍ଟର ଥାଏ, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଦିସ୍, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍, ଉପରେ ଥାନ୍ତି ସିଏମ୍। ଜଣଙ୍କର ନାମରେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଡେପୁଟି ଅଫ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ଅନ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ରହିବେନି କି? ଆରେ ଲଜିକାଲି ଭାବ, ହି ଅର୍ ସି ଇଜ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ସମଥିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନାହିଁ, ସେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ବି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ବଟ୍ ନାମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛି, ଡେପୁଟି ସିଏମ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯାହାହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଉପରେ ରହିବେ ନା, ଅନ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର। So first should actually raise green flag. This is correct. Place higher in order of precedence. But what about the second statement? Finds mention in the constitution. तर नाही मेन्शन नाही कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली। ଏବେ ଭାବ ଡେପୁଟି ପିଏମ୍, ଡେପୁଟି ପିଏମ୍ ବି କିଛି ଅଛି କି ଆମର କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ଅଛି? ଦେଖ ସବୁ ଆର୍ଟିକଲରେ ସବୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କଥା ଲେଖା ଅଛି, କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ମେନସନ ଅଛି, କ୍ୟାବିନେଟ ବି ଇଭେନ ମେନସନ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପରେ ହିଁ ଯାଇକି କ୍ୟାବିନେଟ ଆସିଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ। କେବଳ ପିଏମ୍ ଆଉ ସିଓଏମ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ସବୁ ଜିନିଷ। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଶୁଣିଛୁ ଯୋଉଥିରେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଅଛି? ଆଉ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଆର୍ଟିକଲ ବି ଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ସିଏଜିଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି 280 ନା କ'ଣ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଯେମିତି 300 ଏଇଟା କେତେ 324 ନା 25 ଅଛି ଯେଉଁ ସିଇସି ଉପରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ଙ୍କ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଥାନ୍ତା, ଆମେ ସେଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଚାପ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ୟାର ପଢିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ପଢିଛୁ, ଆମେ ସେଥିରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ବି ପଢିଛୁ। So that means it does not find mention in the constitution. ଯଦି ଡେପୁଟି ପିଏମ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେନସନ ନାହିଁ, ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କୁଆଡୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେନସନ ହେବ? Therefore the answer would be one only. ବୁଝିହଉଛି କ'ଣ କହୁଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାପୋଲେସନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ପଢିବା। ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ସ୍ଲୋ ଗଲୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ। Probably I will call the next class in 2-3 days. और যদি 2-3 days no भी ही पाला, because around 14th I will probably have another class, sociology class. So I'll try to finish it within next 2 or 3 classes. So I'll inform you, and in general also tomorrow बाकी जो schedule थी ना सेटा as usual चलियो। In the next I think 12th around रे tomorrow ଗୋଟେ history ର ଅଛି ନା, approach to history, तो ତା ଉପରେ ବି session ହବ। Samruddhi ma'am will take a session on approach to history. So history based UIQ ସେଦିନ ଟିକେ discuss ହବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ certain subject based ଅଛି ସେଇଦିନ ସେଇ subject ଉପରେ UIQ story we will discuss the approach. And before that I want to give you an overall idea framework of how to use these tricks, how to how to solve the question, and your duty is to use this trick in the mock test. Okay? So if you have any doubts, please ask. If you doubt is Azure class.
Any doubts? No? Okay, then yes, Ashish, no? Ashish, No, no, yeah, good. So, okay. We'll discuss more tricks in the next class. So that's it, guys. We'll meet again. Take care.